हेलो बच्चों। तो इस लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग an expression as a product of two or more expressions is called factorization. So let me give you an example. अगर हमारे पास एक टर्म दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, सो इस एक्सप्रेशन को वी कैन राइट इट एज x plus 2 into x minus 1. So what I mean is, अगर इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे वन बाय वन, so we will get this expression. So this expression here, जो कि हमने लेफ्ट में लिखा है, is expressed as a product of two expressions. So this method, this process is called factorization. और ये जो दो एक्सप्रेशंस मिले हैं हमको, these are called factors of given expression. So this is what we mean by the term factorization. So now let us look at a few examples. अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है and it says factorize 9x square plus 12xy. So suppose इसको हमको factorize करना है. So यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो अगर इस दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेना चाहेंगे, so we will get 3 and x. So if we take 3x कॉमन, हमारे पास क्या रह जाएगा? So 9 में से 3 चला गया, तो 3 into 3 is 9. So we can write 3 and एक x हमने कॉमन लिया है, तो एक x और रह जाएगा. In the second term 3 हमने कॉमन ले लिया है, तो we are left with 4. x we have taken common, so we have y. So this is how we write this expression as a product of two expressions. So this is called as factorization. Let us look at a few more examples. So in the next example, we have 2a into x plus y minus 3b into x plus y. Now clearly if we look at these two terms, दोनों में x plus y present है. So what do? We take x plus y common and what we are left with? तो जब हमने x plus y इससे कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा 2a, तो हमारे पास मिलेगा 2a माइनस दूसरे टर्म में से x plus y कॉमन लिया, तो क्या बचा? 3b. So we have 2a minus 3b. So this is writing this expression as a product of two expressions. Now let us take one more example. So here the example is x into x minus y raised to 3 plus 3x square y into x minus y. So what do we observe here? What are the common terms? तो एक x minus y common है हमारे पास और एक x भी है common हमारे पास. So if we take x into x minus y common, what do we have? What are we left with? तो इसमें से x minus y का स्क्वायर बच जाएगा. So we can write x minus y का स्क्वायर. From this term एक x common गया, we are left with 3x and y. So we can write plus 3xy. So if we simplify this, we get x into x minus y into, we are going to expand this. तो a minus b का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? It is x square plus y square minus 2xy plus 3xy. And if we further simplify this, we get x into x minus y into x square plus y square plus xy. So this is how we write this given expression as a product of three expressions. So these are called factors.
of the given expression, and this method is called as factorization. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं. सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड जिसको हम लोग कहते हैं बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर. द नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड factorization by grouping. So let me write here method factorization by grouping. Now here let us say we have a question और ये क्वेश्चन कह रहा है factorize number 1 x square plus y minus xy minus x. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. लेट अस टेक अ फ्यू मोर क्वेश्चंस. दूसरा क्वेश्चन है लेट अस से ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स. लेट अस से वी हैव अ थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो और ये है ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस ए प्लस 4. एंड एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे फोर्थ वाला. इट इज 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc. सो ये रहा हमारे चार क्वेश्चंस. तो इफ यू लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन इट इज वेरी वेरी सिंपल. नाउ व्हाट वी विल डू हियर इज इफ यू लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे इस टर्म और इस टर्म को एक साथ लेंगे. सो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स. नाउ हम इन दोनों का एक ग्रुप बनाएंगे एंड इन दोनों का एक ग्रुप बनाएंगे. तो इन दोनों टर्म्स में से वी विल गेट x कॉमन. सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? वी आर लेफ्ट विथ x माइनस वाई. और दूसरे टर्म में से व्हाट डू? वी टेक माइनस वन कॉमन. सो वी गेट माइनस वन. अगर हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास बच जाएगा x माइनस वाई. नाउ ऐसा इसलिए होगा बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई माइनस वन इंटू एक्स विल बी माइनस एक्स जो कि हमें यहां पे दिया हुआ है. And minus 1 into minus y will become plus y. That is what we have here. Now, the idea of taking minus 1 common is because these two terms now look exactly the same. Now, clearly, if we take these two common, हमको क्या मिल जाएगा? X minus y into x minus 1. And hence, we have factorized this expression. Now, let us look at the second example. Second question. Now here what do is इन दोनों टर्म्स में से हम क्या कॉमन ले लेंगे? सो विल टेक b कॉमन और इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आ जाएगा. तो अगर हमने b कॉमन लिया तो हमारे पास बचेगा a प्लस सी और थर्ड और फोर्थ टर्म में से अगर x कॉमन लेंगे तो अगेन वी विल हैव a प्लस सी. सो अगेन वी कैन टेक a प्लस सी कॉमन एंड वी आर हैविंग नाउ b प्लस x. तो ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स. Now let us look at the third and the fourth term. So let us go to the next page. Now, third question के लिए again, if we look at the first and the second term, दोनों में से हमको a common आ जाएगा. So if we take a common, we are left with a plus 4 and second term already is a plus 4. So we can write this as a plus 4 into 1. तो अगर a plus 4 हमने common ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा a plus 4 into a plus 1 and that is the answer to this question. So it is very easy. Now let us look at the fourth question. Now fourth question में हम क्या करेंगे? Now look, we will take this term here and this term here and similarly this second and last term. So first of all let me write it as 6ab plus 12ac minus b square minus 2bc. So what can we take common from these two terms? हम देखो 6 कॉमन ले सकते हैं और हम a भी कॉमन ले सकते हैं. तो बेसिकली 6a अगर हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बचेगा b प्लस 2c और थर्ड और फोर्थ टर्म में से वी कैन टेक माइनस b कॉमन और हमारे पास आ जाएगा b प्लस 2c. तो अगेन b प्लस 2c दोनों जगह हमको मिल गया. So that we will take common
एंड हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 6a minus b, and that is how we solve this question.